This is lesson number 3 of partial fractions. Today we will study the type 4 of partial fractions. Type 4 of partial fractions. Let fx is equal to, these are the examples of type 4. Fx is equal to x square over x plus 1, x minus 2. And the second example is, if fx is equal to x3 over x plus 2, x minus 1. Clearly, in these two examples, the degree of the variable in the numerator is equal to the degree of the variable in the denominator. यहाँ पे डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी डिग्री ऑफ x या डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2. इनका प्रोडक्ट लेंगे x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x स्क्वायर. तो ये इनको पॉलिनोमियल भी कहते हैं. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन द न्यूमिनेटर is equal to the degree of the polynomial in the denominator, then the fraction is improper fraction. टाइप 4 में हमने क्या पढ़ना है? improper fractions. These are both fractions are improper fractions. टाइप एग्जांपल नंबर 2 में देखें आप, in the numerator the degree of the variable is 3. In the denominator, degree of the variable is 2. Both these examples are of type 4. Clearly, both the fractions are improper fractions. Improper fractions. Before this, we have studied type 1, type 2, type 3. In all the types 1, 2 and 3, the fractions were proper. But in the type 4, the fractions will be improper fractions. Both the fractions are improper fractions. Let we start this question. तो यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करूं कि बिफोर एक्सप्रेसिंग द फ्रैक्शन इनटू partial fractions, we must make this fraction improper fraction into proper fraction. Then we can express the function into partial fractions. Now we are going to start this question. This question is of May-June 2018 and variant is 3, 1. This is the question. If fx is equal to 12x square plus 4x minus 1 over x minus 1 into 3x plus 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. ये तो मैंने एग्जांपल ही खुद लिए. जब आपने उसको एक्सप्रेस करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, सबसे पहले इसको देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो क्लियरली द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर बिकॉज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 in the numerator and the degree of the polynomial is
आल्सो 2 इन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ x 2 है और डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम पावर ऑफ x जो है वो 2 है, तो सो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी हैव टू एक्सप्रेस fx इन पार्शियल फ्रैक्शन। So before expressing in partial fraction, we must change this fraction into this improper fraction into proper fraction by using a method that is called long division method. तो आज आपने long division method जो है वो सीखना है। long division method क्या है? we will divide the numerator by the denominator. डिनोमिनेटर पे आपने इसको डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर को हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2। मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2। सिंप्लीफाइंग वी गेट 3x स्क्वायर minus x minus 2. So product form of these two factors is 3x square minus x minus 2. Now we will divide 12x square plus 4x minus 1 by 3x square minus x minus 2 using long division method. long division method क्या है? Dividing numerator by denominator. Numerator is 12x square plus 4x minus 1. This sign will be used for long division method. ये long division method के लिए ये है साइन है। तो डिवाइजर इज 3x square minus x minus 2, 3x square minus x minus 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डिवाइडेड एंड दिस इज डिवाइजर। आ जाए 12x square, तो वो है 4। तो 4 को हमने लिख लेना है यहाँ पे। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर को, तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, 12x स्क्वायर। अब 4 को हमने दूसरी टर्म जो है माइनस एक्स, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, दैट इज माइनस 4x। तो माइनस 4x विल बी हेयर। नो 4 will be multiplied by the third term, that is negative 2, so that is negative 8. Negative 8 will be here. Now we have to subtract these terms. We are subtracting, then we will change the sign of the lower terms. ये साइन हम चेंज कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग। यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो वी गेट दिस इज कैंसल आउट, 12x square positive negative cancel out. We are adding 4x plus 4x, this is 8x, 8x और 8 minus 1, that is 7, 8x plus 7. This is called a remainder. This is called remainder. This is divisor and this is dividend. Okay. Now अब आपने एक ये देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं। जस्ट इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हम डिवाइड करते हैं 8 डिवाइडेड बाय
8 divided by 5, 8 divided by 5, 5 ones are 5 और 3 इज रिमाइंडर। तो आप होल में इसको कैसे लिखते हैं, 1 होल 3/5, या इसको लिख सकते हैं 1 1 प्लस 3/5। इन बोथ वेज आंसर इज 8/5। यहाँ एलसीएम लेके देखें तो 5 1 प्लस 3/5 वो भी 8/5 ही आएगा। 1 होल 3/5 ये भी 8/5 होगा। Now we will use this method here. So we can write it 4 plus divisor over remainder over divisor. So we will write it in this form. So this will become we can write 4 fx becomes 4 plus 8x plus 7 over this डिवाइजर। अब डिवाइजर को आपने उस 1 इंटू 3x प्लस 2। तो लेट्स दिस इज फॉर रेफरेंस, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर लें। नो अगर आप देखें तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है। नो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, बट यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई है, 4 एक कांस्टेंट टर्म आ गई है। इस 4 की वजह से ये फ्रैक्शन जो था ये इम्प्रॉपर था। दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फॉर्म ड्यू टू दिस 4। तो अब आप इजीली नो वी कैन एक्सप्रेस दिस फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ये 4 रिमेन्स एज सच, but we will express this function into partial we will express this fraction into partial fractions. Now clearly this is the first form जो आप पहले पढ़ चुके हैं। You have studied in lesson 1. This is a proper fraction because the degree of variable is lower than the degree in the numerator is lower than the degree of the variable in the denominator. यहाँ पे न्यूमिनेटर में पावर 1 है एक्स की और यहाँ पे एक्स की पावर 2 है। तो सो हमने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इसके बनाने हैं, इस फंक्शन के। और लास्ट पे इस 4 का क्या है, इट रिमेन्स ऐसा, इसको लास्ट में जब आंसर फाइंड करना है, एक्सप्रेस कर देना पार्शियल फ्रैक्शन में, तो लास्ट पे 4 ऐड कर देंगे उनके। तो सो we are we are expressing this function into partial fraction. This is the same as you have studied already, because this is type 1, because in the denominator both the factors are linear. So we express this function for reference. This is a. So 8x plus 7 over x minus 1 into 3x plus 2, let this is equal to a over x minus 1 plus b over 3x plus 2। नेक्स्ट स्टेप आप पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप इज वी विल टेक द एलसीएम ऑफ राइट हैंड साइड। एलसीएम इज x minus 1 into 3x plus 2 using LCM method. Dividing the LCM by this factor x minus 1. X minus 1 is cancelled out. We will multiply 3x plus 2 by a. So this becomes a into 3x plus 2. In the same way b into ये factor जो है cancel out with this x minus 1 को b के साथ multiply कर देंगे। So b into x minus 1. Left hand side remains the same. 8x plus 7 over x minus 1
into 3x plus 2, or clearly left hand in the uh, denominator is same in the equation. Cancel out 8x. So 8x is equal to 8x plus 7 is equal to a into 3x plus 2 plus b into x minus 1. Now we will find the values of these unknowns. a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे. वो कैसे करनी है? तो लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि हमारे क्वेश्चन में फैक्टर्स कितने हैं, दोनों लीनियर हैं. ये देखें, डिनोमिनेटर में फैक्टर दोनों बोथ द फैक्टर्स आर लीनियर. उनको सेपरेटली जीरो पुट करें. First we put x minus 1 is equal to 0. From here x is equal to 1. Throughout this equation we will put x is equal to 1. So this becomes 8. 8 into 1 plus 7 is equal to, यहाँ पे देखें आप x minus 1, since x minus 1 is equal to 0, we cannot put here because this becomes 0. Because x minus 1 is equal to 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी. तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x is equal to 1, we get the value of a. a into 3 into 1, 3, that 3 plus 2, simplifying 15 is equal to 5a. From here a is equal to 3. a is equal to 3. Now in the same way, the second factor is in the question, in the denominator, second factor is 3x plus 2. Now we will put 3x plus 2 is equal to 0. Now 3x plus 2 is equal to 0. So from here x is equal to negative 2 over 3. Now in the same way, in this equation, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 over 3 पुट करेंगे. तो दिस बिकम्स 8 into minus 2 over 3 plus 7. Since 3x plus 2 is equal to 0, तो हम यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, हम यहाँ पे पुट करेंगे. We can find the value of b. So b into minus 2 over 3, this is the value of x, minus 1. So simplifying we can get the value of a. Left hand side को simplify करेंगे तो we get minus 16 over 3 plus 7. Right side become minus by taking LCM we get minus 5 over 3. So left side become 5 over 3 by taking LCM 5 over 3. On the right hand side 5b into minus 5 over 3. This is cancel out. तो यहाँ पे 1 और राइट साइड पे b into negative 1. So from here we get b is equal to negative 1. So this is the value of b. Now we have found the value of a and b. Now we will put these values of a and b here. अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यूज पुट करेंगे तो दिस बिकम्स, या हम ये देखें हमने रेफरेंस के तौर पे इसको a से रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो इसका आंसर हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में ये लेके आए हैं. पार्शियल फ्रैक्शंस इसके, इस फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस ये हैं. तो यहाँ पे a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे तो इस फंक्शन को हमने एक्सप्रेस कर दिया. और साथ में अब जो a और b की वैल्यूज है यहाँ के पार्शियल फ्रैक्शंस में और इस a में पुट कर रहा हूँ.
ए इक्वेशन जो है फंक्शन को हमने इस फंक्शन को ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है फॉर रेफरेंस. नो फ्रॉम ए वी कैन राइट द फाइनल फंक्शन एज 4. 4 रिमेन्स एज सच. ये देखें यहाँ पे लॉग डिवीजन मेथड से 4 आया था, 4 को एज सच लिखने में ले गए और इस फ्रैक्शन को इस प्रॉपर फ्रैक्शन की में ए और बी की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है वो पुट कर देंगे. तो फाइनली वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास -1 है तो सो वी विल पुट हियर -1 माइनस 1 ओवर 3x प्लस 2. दिस इज द फाइनल आंसर. Now, next question of the same form. Next question is of November 2021. The variant is 3-2 of the same type. Clearly, the fraction is improper because the degree of the polynomial is of degree 2 in the numerator and the polynomial of degree 2 in the denominator. Yeah, simply you can say that न्यूमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 2 है और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 2 है. तो सो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो बिफोर expressing in partial fraction we must have it in the form of partial proper form by using long division method, जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया है. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will find the product of these two factors. We will write it in product form. Multiply कर देंगे 2x minus 1 into x minus 3. So we get 2x square minus 6x minus x plus 3. So finally we get 2x square minus 7x plus 3. This is the product of 2x minus 1 into x minus 1. Now we will divide the numerator by the denominator by using long division method to make it in proper form. Long division method 4x square minus 13x plus 13 divided by 2x square minus 7x plus 3. लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? अब आपने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म जो है 2x स्क्वायर है और डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म जो है 4x स्क्वायर है. तो सो हमने इसको 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये 4x स्क्वायर आ जाए तो दैट इज 2. तो वी विल राइट हियर 2. हम यहाँ पे 2 लिखेंगे. अब 2 को मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर के साथ, दैट बिकम्स 4x स्क्वायर. तो 4x square. Now we will multiply this 2 by second term, that is minus 7x. We get minus 14x. Now we will multiply 2 by the third term, that is 3. 6 आ जाएगा. यहाँ पे हम 6 लिखेंगे. Now we will subtracting. We will change the sign. This is cancel out. 4x square positive, 4x square negative. Or no, 14x minus 13x, that is x, and minus 6 plus 13, that is 7, x plus 7. No, we can write it in this form. जिस तरह अभी आपको मैंने बताया था कि if you are dividing 7 by 2, 2, 3 or 6, you can write 3 plus 1 over 2. In the same way we can write this fraction
2 plus x plus 7 over this divisor. By using this process, so we can write this 2 plus this remainder over divisor. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 plus x plus 7 over divisor. ये देखिए डिवाइजर को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, बट वी विल यूज इट्स ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज इन फैक्टर फॉर्म. तो वी विल राइट हियर both the factors 2x minus 1 into x minus 3. ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्यों यूज करते हैं, ताकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको हम प्रॉपर बना लें. तो सो नो क्लियरली दिस फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ गई है. तो सो अब लेट दिस इज a. Now we will express this fraction. This is proper fraction. Now we will express this fraction into partial fraction, or this is same. You have studied already type 1, because the both factors in the denominator are linear. So we will express. We can easily express in partial fraction. This is for reference. A mention किया हुआ है for reference. So we will express it x plus 7 over 2x minus 1 into x minus 3. That this is identical equal to a over 2x minus 1 plus b over the other factor, that is x minus 3, b over x minus 3. Now we will take the LCM of right hand side. LCM is 2x minus 1 into x minus 3. By using LCM method, we write here ये फैक्टर जो है 2x minus 1 जो है वो 2x minus 1 से कैंसल आउट. x minus 1 जो है वो x minus 3 जो है ये a से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो we will write here a into x minus 3. In the same way, now this factor will be cancel out. तो b को हम 2x minus 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Right hand side remains the same, x plus 7 over 2x minus 1 into x minus 3. Denominators are same from in the same in both sides. So this is cancel out. The remaining is x plus 7 is equal to a into x minus 3 plus b into 2x minus 1. Now we will find the values of unknown a and b. Putting these factors separately equal to 0. इन दोनों फैक्टर्स को हमने अलग-अलग से 0 पुट करना है. पहले हम x minus 3 को 0 पुट करेंगे. x minus 3 is equal to 0. From here x is equal to 3. So we will put x is equal to 3 in this equation. तो x minus 3 is equal to 0 है, तो यहाँ पे पुट नहीं हो सकता क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने x minus 3 को 0 पुट किया है. तो यहाँ पे पुट होगा तो v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो सो लेफ्ट साइड पे x 3 plus 7 is equal to b into b into 6 माइनस हमने यहाँ पे 3 पुट किया है. 2 3 6 माइनस 1 5 आ जाएगा. 6 माइनस 1 लेफ्ट साइड पे 10 है और राइट साइड पे 5
b from here the value of b will be 2। यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली है। इन द सेम वे दूसरा फैक्टर हमारे पास है, the other factor is 2x minus 1, so we will put 2x minus 1 is equal to 0, 2x minus 1 is equal to 0, from here x is equal to 1 over 2। now in the same equation, इसी इक्वेशन में अब हमने x को 1 over 2 पुट करना है, तो we get 1 over 2 plus 7 is equal to, since 2x minus 1 is equal to 0, we cannot put here because ये finish हो जाता है, 2x minus 1 0 है, तो so we can put here, तो हम we can get the value of a, so a into x, the value of x is 1 over 2 minus 3, simplifying left hand side by taking LCM, 15 over 2, right side become minus 5 over 2 by taking LCM, so from here the value of a will be minus 3. This is the value of a. Now we have found the values of unknown. This is the value of b. b is equal to 2, a is equal to minus 3। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन a में। तो नाउ फंक्शन इज, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखना है फंक्शन, दिस इज द फंक्शन ऑफ x। तो इस फॉर्म को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दिया और a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो सो फ्रॉम a, वो रेफरेंस के तौर पे जो हमने a लिखा हुआ है वहां पे fx विल बिकम, fx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें आप ये 2 रिमेन्स एज सच, 2 रिमेन्स एज सच, और इसको इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना है। तो सो फाइनली वी गेट fx इज इक्वल टू 2 प्लस a is minus 3, a over 2x minus 1 plus b over other factor, b is 2, 2 over x minus 3। तो अब हम फाइनली इस माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ये पॉजिटिव यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। तो फाइनली वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 minus 3 over 2x minus 1 plus 2 over x minus 3। This is the final answer. Now we have studied all the types of the partial fractions which are included in the syllabus. So with this we are finishing it and we will study the next topic, that is our second subtopic of algebra is binomial theorem. Inshallah we will study the binomial theorem tomorrow. Okay, Allah Hafiz.